guys, welcome back to my channel. This is Shivangi Kumar. So today I'm going to be telling you all about the skincare product that you need to have while you're a teenager and have an acne prone skin. Yeah, so I've had acne prone skin since 10th grade. It's been a long time. I have had my struggles with it. I had countless appointments with the dermatologist to figure out how to save my skin, how to not have like 20-30 pimples on my face at a time. So it's been a while since I've successfully figured out what products work for me and what products actually are good enough to invest in. Ever since then मैंने वही products मैं follow कर रही हूँ. मैंने कोई नया product as such add नहीं किया except for 1 or 2 face washes that I use now, and it's been pretty much the same since then. So I thought, why not share this with you, because I know how tough it can be to figure out skin को अच्छा कैसे रखना है, how to not get pimples every morning, new pimples every morning, and it's a bad uh, experience when you have acne all over your face. बहुत confidence पे भी फर्क पड़ता है. So I know all that. So here I am to help you out. तो इसके साथ साथ मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी बताती रहूँगी, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि I am also lactose intolerant. I don't my body does not digest milk very well. I can have cheese, or I can have processed milk in some case, but I cannot have it in like its original form. I can't have milk directly. I can't have ice creams or chocolates because that's how. I mean, that's when my skin starts to react. And because I had two ice creams 2 days ago, 2 days ago, I've already had one pimple. I mean, that's how sensitive my skin is. But overall, if I completely eliminate dairy from my food, so I can actually control my acne. But obviously, ice creams and chocolates are something that I can't actually get rid of completely, or like नहीं कर सकते, बॉयकॉट नहीं कर सकते. सो दिस इज अ लिटिल प्राइस दैट आई पे. सो स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है टू क्लींस योर स्किन, राइट. अपनी स्किन को कंप्लीटली क्लीन करना, देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप्स. सो उसके लिए एंड उसमें भी दो पार्ट्स हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप एवरी डे, अगर ज़्यादा भी नहीं, इफ यू आर वेयरिंग थोड़ा बहुत भी मेकअप और इवन जस्ट आई लाइनर, I would suggest that you use Pond's micellar water to remove that makeup, because it does not have any alcohol in it. And the people who are prone to acne, जिनकी acne prone skin होती है, it's better that you don't use any product that has alcohol in it. काफ़ी harsh हो जाता है, और जो acne है वो alcohol के साथ mix होके react भी करता है. तो acne prone skin already बहुत sensitive होती है. Why do you want to add alcohol to it? And this Pond's with micellar water has been my support ever since I've gotten it. I think this is my third bottle, and I use it every time I have makeup on my face, be it lipstick, be it eyeliner, be it a little BB cream or concealer and all of that. Then the second step is to get rid of all the dirt that is left after you've removed your makeup. कोई भी मेकअप रिमूवर होता है या कोई भी मिसलर वाटर होता है या क्लेंजिंग वाटर होता है, वो कम्प्लीटली आपकी स्किन को साफ नहीं करता है. तो यू नीड टू डबल क्लेंज योर स्किन. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ डबल क्लेंजर, बिकॉज इट जस्ट मेक श्योर दैट पूरे पोर्स कम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं, कोई लेफ्ट ओवर मेकअप नहीं बचता. सो या, आई डू दैट. सो I use Cetaphil's oily skin cleanser, which is amazing. I mean, it's like a very drugstore kind of a product. कहीं पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा. And I use oily skin cleanser because it's for oily and acne prone skin specific. So you take a little bit of this and just cleanse your skin with it and wash it off with lukewarm water or normal cold water. वो भी चलेगा. So I'm gonna be putting down all the links to the products that I am mentioning in the video. तो तुम लोग वो जाके खरीद सकते हो, be it on Nykaa or Amazon. Says that it removes excess oil without drying, like the first advantage of it. Then it is soap free and non-irritating and hypoallergenic. So these are all the qualities that you need in a cleanser when you have an acne prone skin. So once you're done with the first step and the second step, then I recommend that you use a foaming cleanser using the Face Shop's Rice Water Bright foaming cleanser. It's a little bit expensive, but ये क्या है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज करना होता है, and it gets rid of all the dirt from your face. Even it covers the neck. छोटा सा पीस साइज अमाउंट लेना होता है, and
you're good to go. So I have started using this since last 10 months and the results have been amazing. I mean, पहले मेरा skin tone इतना even नहीं हुआ करता था. After I started using this, my skin tone has become even, my texture has become good. ब्रेकआउट्स बहुत कम होते. सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. आई अंडरस्टैंड कि एक फेस वॉश के लिए 600 या 700 रुपीज इज अ बिट मच. इट्स ऑल्सो अ लिटिल एक्सपेंसिव सा ब्रांड है ये, लेकिन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इतनी बॉटल, ये जो पूरी ट्यूब है, दिस goes on for 4 to 5 months. I guess that's fine. अगर तुम कोई नॉर्मल सा भी फेस वॉश लेते हो 50 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, वो हार्डली एक महीना चलेगा. एंड दिस ट्यूब वर्क्स फॉर लाइक 4 to 5 months, विच इज ओके. And it's a little price to pay for a good looking skin, right? So before I dive into the next step, I really want to tell you about this one product that I found at Zibby Walk. आई थिंक ये मिनीसो एंड जिमी वॉक करके कुछ जापानीज कोरियन ब्रांड्स है, राइट? आई डोंट रियली नो जिमी वॉक कौन सा ब्रांड है, बट आई गॉट दिस स्क्रबर फ्रॉम जिमी वॉक. इफ यू हैव अ क्लोज लुक एट इट, इट हैज लाइक छोटे छोटे पॉइंटी एंड्स एंड इट्स ऑल रबर एंड इसके अंदर स्पंज है. तो व्हाट आई डू इज व्हेनेवर आई feel like I've had makeup on for too long or I feel my skin is a little more dirty than usual, so मैं पूरा face wash लगाने के बाद I just use it on my face and it gets rid of all the leftover makeup. This has been a game changer for my skin and my overall healthy looking skin. So moving on to the next step. बहुत basic सा skin care routine होता है, CTM. So we are done with the cleansing stuff. Now the toning part. Okay. So I was never a fan of using toners. I didn't really know कि toners का फंक्शन क्या है, वाई डू वी एक्चुअली नीड देम एंड क्या ज़रूरत है. इतने सारे फैशन ब्लॉगर्स को हम देखते हैं, बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड until a face toner works for you and then you understand कि इसकी वैल्यू क्या है. So I started using Biotics Bio Cucumber Pore Tightening Toner accidentally. Accidentally भी ऐसा था कि I just started using it. I mean out of nowhere. I was like okay चलो try कर लेते हैं. I kept using it. I kept using it. और मैंने एक महीने तक कुछ ध्यान नहीं दिया. And after a month I got complimented on my even skin tone. And I was like okay, but I mean, I then started thinking कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या मैंने डिफरेंट. इट्स लाइक रियली माइल्ड, इसकी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी नहीं है. सो आई सजेस्ट दैट यू गिव दिस अ ट्राई. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके लिए काम करेगा, ऑब्वियसली सबकी स्किन डिफरेंट होती है, सबकी स्किन की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, बट सीरियसली एक बार ट्राई करना बिकॉज इट डजंट हैव लाइक वेरी strong ingredients nahi hai. It's made by cucumber. I mean, its main ingredient is cucumber, so it's like really simple and mild. So then comes the part where you need to moisturize your face. So just to be sure, you always need to cover your face from head to neck. Still here. कभी भी यहाँ तक मत करो, हमेशा यहाँ तक करो, because this entire thing shows. This is something that is on display, right? So the product that has helped me a lot and is again a game changer. मैंने काफी बार game changer बोल दिया because couple of products have like really worked for me and they have been game changer for me. Okay, even when I'm indoors मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं sunscreen avoid ना करूँ and doctors भी यही बोलते हैं sunscreen को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है. It's really important even when you're indoors. Keeping in mind कि मेरी skin type क्या है, I use Pond's non-oily sunscreen. It is SPF 50 and I use it every day. Even when I have nowhere to go, I still use this. But yes, only सिर्फ दिन में मैं इसको यूज़ करती हूँ, रात में यूज़ नहीं करती. रात में बहुत माइल्ड सा Oriflame का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. So these are the two moisturizers that I use. Why I use these? Because इनका थोड़ा सा मैट फिनिश है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है. So ये तो बात होगी how to take care of your skin on a daily basis. But on a weekly basis, you also need to exfoliate your skin. You also need to apply mask. So you can use the face scrubs by Himalaya. They work perfectly well. They are actually targeted for oily skin, acne prone skin. So Himalaya targets all those problems. So you can use face mask, face scrubs by them. But currently what I am using is the Beautyco Space Scrub. It has chocolate and coffee in it. I recently got this from a brand and I ended up loving it. I've been using it for last 3 weeks, I guess, and it's been amazing. But it's like really gentle, and coffee and chocolate are really moisturizing for your skin. And actually, with my oily skin,
completely works. मेरी skin काफ़ी स्मूथ एंड टेक्सचर बहुत अच्छा फील होता है, एंड आई डोंट रियली फील लाइक मेरी स्किन काफ़ी ऑयली होती है इसके बाद. इट्स लाइक अमेजिंग, लाइक मैट फिनिश आता है. एंड देन कमिंग टू फेस मास्क, आई रियली सजेस्ट यू दैट यू यूज क्ले मास्क सिंस योर स्किन इज ऑयली एंड एक्ने प्रोन. काफ़ी बार बोल दी मैंने. You need to use clay mask because clay mask actually sucks out all the excess oil from your skin and sucks out all the dirt from your skin. That's their job. So I suggest you use those. So the ones that I use are, I have this one by Innisfree. It's Jeju Volcanic Pore Clay Mask. It's amazing. This is actually quite good. Whenever I have like a heavy makeup day or I'm shooting for so long, I use this on my face. I keep it on for 20 minutes and wash it off with lukewarm water. देन अगर मुझे लगता है आई हैड लाइक अ लॉन्ग डे एंड आई जस्ट नीड टू क्लेंस माई स्किन, ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई यूज़ लॉरियल्स प्योर क्ले मास्क एंटी ब्लेमिश. मैंने एक्चुअली ये खरीदा ही इसलिए था ताकि जो मेरे एक्ने मार्क्स हैं वो मैं कम कर सकूँ. बट इससे ऐसा नहीं हुआ. एक्ने स्कार्स पर कुछ असर नहीं आया, बट इट एंडेड अप बीइंग अ रियली गुड क्लेंजर. अगर एक बहुत हल्का सा मेरे को फेस मास्क यूज करना है तो आई यूज दिस वन. अगेन आई हैव दिस वन बाय ब्यूटी एंड दिस हैज चॉकलेट एंड कॉफी इन इट. अगेन ये भी एक क्ले मास्क है. इट रियली हेल्प्स मी कीप माई स्किन वेरी मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर लाइक रेडिली अवेलेबल इन द सुपर मार्केट और ऑन नाइका और ऑन अमेजोन. तो इसकी अवेलेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. दे आर ऑल्सो लाइक वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सम ऑफ देम आर लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट आई believe कि वो एक investment है for your skin. So if you have any question, you can comment down below and I'll be prompt in replying to that. So thank you for watching my video. I hope this was helpful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. Like this video if it was helpful. Again, I'm saying just for the sake मैंने video नहीं बनाया. I really want to help you out. So yeah, like this video, comment down below, share it with your friends and ask them to subscribe to my channel. And if you still have any question, you can come to my Instagram account. I go by Spoil by Style and I'm very prompt in replying to your messages. So I'll do that so you can communicate with me there as well. Do follow me on Instagram. Alright, so thank you for watching. Bye bye.